Okay, so we will discuss about the uterine artery embolization, that is the RCOG guideline, and it was updated in 2013. So, what are the indications for the fibroid embolization? Uterine artery embolization is indicated in the woman with the symptomatic fibroid, especially causing the heavy menstrual bleeding, pain, pressure symptoms, and the dyspareunia, recognized by the NICE as an appropriate treatment for the heavy menstrual bleeding. Okay? May be useful in the woman with the contraindication to the surgery, unwilling to receive the blood transfusions with a prior unsuccessful fibroid surgery, may be considered in the women with the adenomyosis alone coexisting with the fibroid. After counseling, caution advice when used solely for the infertility without other symptoms. ठीक है. कंट्राइंडिकेशन क्या है? एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन दैट इज़ दी एसिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स में हम नहीं करेंगे, और करंट या रिसेंट जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन उसमें नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी में नहीं करेंगे, डायग्नोस्टिक अनसर्टेनिटी उसमें नहीं करेंगे, रिफ्यूज़ल फॉर द हिस्टेक्टमी अंडर द एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, तो उसमें भी नहीं करेंगे. रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन क्या है इसकी? सब म्यूकोसल पेडिकुलेटेड फाइब्रॉइड में नहीं करेंगे. रिस्क ऑफ दी स्लफिंग एंड सेप्सिस का रिस्क होता है तो उसमें नहीं करेंगे, ठीक है. पेडिकुलेटेड फाइब्रॉइड में जो सब म्यूकोसल होते हैं, ठीक है, उसमें नहीं करेंगे. लार्ज इंट्राकैविटी आर दी सबसीरोजल फाइब्रॉइड्स में भी नहीं करेंगे ड्यू टू द रिस्क ऑफ द डिटैचमेंट. डिज़ायर फॉर द फ्यूचर फर्टिलिटी इसमें भी नहीं करेंगे, ठीक है. सो दीज आर द रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन. Subfertile patient and those planning for the pregnancy, intracavity and the intramural fibroid may impact the fertility and pregnancy outcome. Myomectomy may improve the outcome, but evidence remains the weak about the uterine artery embolization may reduce the risk of the fibroid volume, may adversely affect the uterine placental perfusion. So that's why that is not suitable for the patient who are want to conceive and who want to preserve her fertility. So we will not offer the uterine artery embolizations in this case. Okay, so risk including the uterine rupture, impaired implantation हो सकती है इसमें, ठीक है. uterine artery embolization not routinely recommend for the fertility preservation, but can be considered after the specialist counseling. Reproductive outcome between the uterine artery embolizations and the myomectomy remain uncertain. Trial in progress. Counseling, consent, communication. When women should receive the full counseling in the uterine artery embolization versus the alternative myomectomy or the hysterectomy. Interventional radiologist must explain the procedure, detail, recovery and the hospital stay. Complication rate इसका कितना है? 20 to 30% है. माइनर कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? प्रोड्यूसिंग हो सकती है, डिस्चार्ज हो सकता है, पोस्ट एम्बलाइजेशन सिंड्रोम हो सकता है, एमेनिरिया हो सकता है 1.5 to 7% इन केसेस, फाइब्रॉइड एक्सपल्शन हो सकती है 6%, रियर नीड फॉर दी हिस्टेक्टमी, ठीक है, दैट इज़ दी 1%. अच्छा, रिस्क फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट इज़ द हायर इन द यंगर वुमेन that want to conceive. Younger women fertility pregnancy impact the uncertain caution in the reproductive age women. Standard hospital consent form plus the patient leaflet, तो फिर उनसे आप स्पेशल कंसल्ट लेंगे रिगार्डिंग द फर्टिलिटी. Pre-treatment assessment and the prophylactic measure, clinically assessment to exclude the known fibroid pathology. MRI preferred for the diagnosis superior to the ultrasound. MRI may alter the management up to the 22% of the cases. Pregnancy must be excluded before the procedure. IUCD ideally removed before the procedure. Prophylactic antibiotic reasonable but the evidence limited. Local protocol guided to use metronidazole and the cephalosporin quinolone. Avoid the uterine artery embolization within the 60 days of the GnRH agonist. ठीक है, if possible may affect the technically increase the success rate, ठीक है. So routine thromboprophylaxis may affect the technical success. अच्छा, routine thromboprophylaxis if the venous thromboembolism risk is present. अगर आपने किसी पेशेंट को GnRH दी है ना, तो फिर आप उसमें विदिन 60 डेज आपने दी है, ठीक है, 3 मंथ हो गए, तो फिर उसमें फिर बेटर ही कि आप यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन उसको अवॉइड करें, क्योंकि उसमें फिर रिस्क होता है, सक्सेस रेट डिक्रीज हो जाता है. Procedure performed by the competent interventional radiologist use the femoral artery assess. Uterine artery is catheterized
bilaterally under the fluoroscopy. Embolic agent, that is the 300 to 750 micrometer injected until stasis achieved. Bilateral embolization is a standard. ठीक है, bilateral करें तो better है. Done the ovarian artery embolization rarely. Pain is expected. Preemptive analgesia and the antispasmodic, for example hyoscine is used. Procedure time कितना होता है? 30 to 90 minutes. No routine bladder catheterizations. IV sedation with the full monitoring required. ठीक है, तो कैथेटराइज करने की भी नीड नहीं होती, और मोस्टली जो टाइम रिक्वायर होता है वो 30 to 90 मिनट्स होता है. और जो रूट यूज़ करते हैं आप फीमोरल आर्टरी के थ्रू करते हैं. दोनों आर्टरी एम्बोलाइज करते हैं, ओवेरियन आर्टरी नहीं करते, दोनों यूट्राइन आर्टरी करते हैं. ठीक है. अच्छा, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? इमीडिएट जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो ग्रॉइन हेमेटोमा हो सकता है, सीडो एन्यूरिज्म हो सकता है, आर्टरियल स्पासम हो सकता है, कंट्रास्ट रिएक्शन हो सकता है. अर्ली विद इन द 30 डेज में पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम हो सकता है. ठीक है, दैट इज़ रिजॉल्व इन द 10 to 14 डेज. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और डीवीटी भी होती है, बट इट इज़ अ रेयर. लेट आफ्टर दी 30 डेज अप टू दी 4 ईयर वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, दैट इज़ द 16%. Fibroid expulsion, that is the 10%. Infection, that is the 0.5%. May require the IV antibiotic or the hysterectomy. Amenorrhea, that is the age related, and the 1.5 to 7%. Rare ovarian failure and the sexual dysfunction. Contact leaflet and urgent support must be provided for the late complications. अच्छा, individual responsibility in the clinical practice. Clear the consultant led care plan required at all stages. Name the consultant. Responsibility must be documented. Either the gynecologist or the radiologist. Multidisciplinary team approach. Radiologist may assume the lead responsibility. Rapid assess follow-up. अच्छा, फॉलोअप कब करेंगे? मोस्ट इंक्लूडिंग द शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द रेडियोलॉजी एंड द गायनोकोलॉजी. जीपी मस्ट बी अपडेटेड विद द डिटेल ऑफ द यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, आउटकम, साइंस ऑफ द कॉम्प्लिकेशन. मिनिमम 1 आउट पेशेंट फॉलोअप एट दी 6 month. टेलीफोन रिव्यूज एक्सेप्टेबल. ठीक है. इमेजिंग इज एसेंशियल इफ द पेशेंट हैव द परसिस्ट सिम्टम्स आर द रीअकर. लो थ्रेशोल्ड फॉर द गायनोकोलॉजिकल रेफरल इन द केस ऑफ द सस्पेक्टेड कॉम्प्लिकेशन. Suggested areas for the further study: large randomized control trial comparing the uterine artery embolizations versus the myomectomy for the symptoms control, fertility in the pregnancy outcome, ovarian reservoir, optimal embolization agent and the technique, infection prevention strategies. और इन पे अभी स्टडी हो रही है. ठीक है. अच्छा, एग्जाम पॉइंट्स पढ़ते हैं. Uterine artery embolization is the uterus sparing option for the symptomatic fibroid, and contraindications including the infection, pregnancy, diagnostic doubt, and the refusal for the hysterectomy. तो फिर उन पेशेंट्स में हम नहीं करेंगे. सब fertile women who must receive the specialist counseling due to the fertility outcome. MRI is essential for the pre-treatment planning and exclusions of the malignancy. तो पहले MRI ज़रूर करेंगे ना यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन से पहले, ताकि हम मैलिग्नेंसी को भी एक्सक्लूड कर दें और ट्रीटमेंट भी हमारा प्लान हो जाए फिर. अच्छा, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक एंड प्रेगनेंसी टेस्टिंग आर एडवाइज बिफोर द यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन. ठीक है. तो एंटीबायोटिक कौन सी देंगे? मेट्रोनिडाज़ोल देंगे या सेफेलोस्पोरिन देंगे? पोस्ट एम्बोलाइजेशन सिंड्रोम इज़ अ कॉमन, मैनेज कंजर्वेटिवली. मोस्ट कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट द लेट कॉन्टैक्ट pathway must be established. Amenorrhea risk increases with the age. Ovarian failure is a rare but the possible. Follow-up including the 6-month clinical review and imaging if needed. Okay, so that's all about the uterine artery embolization.